So yesterday we had ended on doctrine of eclipse. And I told you that for the next part we have to look at doctrine of severability. And severability, if you see, it is about post constitutional laws. है ना? तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया है. दैट इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. यानी 13 क्लॉज 2 को एक्सप्लेन करने के लिए इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है. डॉक्ट्रिन ऑफ severability. Okay, and I would have told you that when you look at this doctrine, so if you make a law, then अगर मान लो ये एक लॉ है, and if CDE, if it is violative of fundamental right, then as per this doctrine, these three parts will be severed from it, and then what will remain will be the law. This will remain the new law. Okay, लिखो इसमें. This doctrine means this doctrine means that if a provision means I'm talking about a law. Okay, if a provision contravenes fundamental right, तो देखो मैंने पूरा लॉ को तो नल एंड वॉइड नहीं किया ना, केवल जो प्रोविजन कॉन्ट्रावीन कर रहे थे उसको सिवर कर दिया, उसको हटा दिया. बाकी लॉज रहेंगे. ओनली दोज पार्ट ऑफ द लॉ which is violative of fundamental right, they will be severed. They will be severed from the law. They will be removed from the law. And whatever remains, that can exist as a law, if it makes a meaningful law in that sense. If a provision contravenes a fundamental right, then only those portion of the law, those portion of the law which contravenes fundamental right, is declared null and void, and देखो only those portion which is contravening fundamental right, it is declared null and void, and not the entire law in question. Okay, so what we also see, especially with respect to this part, that is 13 clause 2 plus some other provisions in the constitution, we can say that we also derive the idea of judicial review from this part of the constitution. मैंने कल 13 clause समझा दिया था, definition of law, and law would include all rules, notifications, orders, है ना, bylaws, all of this. Plus मैंने last में ये लिखा था, customary laws तक को हम उस law के definition में मानते हैं, include करते हैं. ठीक है? So we have understood what is there in Article 13 of the Constitution. But reading Article 13 of the Constitution gives us an understanding of what we can say the concept of judicial review. यानी judicial review के बारे में संविधान ने कहीं स्पष्ट लिखा नहीं. But if you look at Article 13 Clause 2 and its understanding, what does Article 13 Clause 2 say? It says that any law which contravenes fundamental right, to the extent of its contravention, it will be declared null and void. So what does it mean? It means that these laws which will contravene a fundamental right, it can be reviewed by the judiciary, and if the judiciary finds that these laws which are drafted, they are contravening any of the fundamental rights, then to the extent of how much it contravenes, that portion of the law will be declared null and void. So very interestingly, what you can derive from the reading of Article 13 Clause 2 is the concept of judicial review as well. So now what we need to read now therefore is the concept of judicial review. तो यानी एक नया टॉपिक हम लगाएंगे
यानी हमें ये समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि इसकी बात हम बहुत बार करेंगे. जुडिशियल रिव्यू इज लाइक a very fundamental concept to be understood, because there is no Indian constitution without understanding judicial review. That is why we focus so much on court's judgment, court cases. What are these court judgments and court cases? They have all emerged because the judiciary has the power of reviewing. Because they can review it, that is why we are looking at the judgments and saying the court said that it is null and void. The court said that no, it is fine, you can do it. The court upheld the amendment. कहीं कहीं ये पढ़ेंगे और कहीं कहीं पढ़ेंगे नहीं, कोर्ट ने कहा this is null and void. So why would the court say something as null and void? Because the court have the power of judicial review. So what is judicial review? You will say that judicial review is a power which is basically to the higher judiciary in the country. So higher judiciary reviews the laws. So in a state, high courts can also do or practice judicial review, while Supreme Court, definitely the highest judiciary in our country, they have the authorities. So this falls to higher judiciary. Judicial review cannot be undertaken by the lower judiciary. They don't have this power of judicial review. So what do we see here? Judicial review is that authority of the judiciary through which they can declare a law as unconstitutional. 13(2) में यही बात समझते हैं हम लोग, which means somebody declares the law as unconstitutional, which we call as null and void. So judicial review is that power to the higher judiciary, to declare a law as unconstitutional, to declare a law as null and void. That is what we mean by the concept of judicial review. But only if it is declared null and void if it violates the provisions of the constitutions, which means that provisions of the constitution here for us is 13 clause 2, which is very clear provision which states that any law which will violate a fundamental right, it can, to the extent of its violation, be declared null and void. So that is what we mean by the term judicial review. So there is already a constitution in place, there are provisions of the constitution in place, and if we are doing something which is violative of those provisions of the constitution, then only it can be corrected by the higher judiciary, by what is understood as judicial review. इसी को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा, यानी न्यायालय, उसको ये हक है कि वो ऐसे कानून के को समीक्षा कर सके, उसको रिव्यू कर सके, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये संविधान के प्रावधान के अनुकूल नहीं है तो उसको null and void घोषित करते, यानी it is declared as unconstitutional. That's primarily the idea of the judicial review. Now this is not very clearly spelled out in the constitution. That's why if you see rather the American constitution also, there is no mention of judicial review in it. So where did the Americans got this idea from? So it originated in America. So there was a very famous case in America Supreme Court that was called Marbury versus Madison case. And in that case, the Supreme Court came up with an amazing judgment. Marshall थे, Justice Marshall, and he said that कि judiciary जो independent होती है, any independent judiciary, it has the power to review the laws which are made by the legislature. But why would a judiciary review the laws made by the legislature? Because the judgment said that because laws which are constitution, which means constitutional laws, they are always superior to the laws made by the legislature. That is why laws made by the legislature cannot violate the laws that exist in the constitution. That is why we have the power of judicial review. तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस जजमेंट में ये पावर दिया. They did not derive this power from anywhere, but they said that because the American Constitution has created an independent judiciary, so any independent judiciary, it has the power to review laws made by the legislature. And why? Because any law which exists in the Constitution is always superior to the laws which are made by the legislature. That is why he would say in this judgment that we are actually talking about a idea of judicial review. ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमें कहाँ मिलता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोजीशन? तो कहीं पर हमें इम्प्लिसिट मिलता है. इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाइड वे में, नॉट वेरी क्लियर बट इम्प्लिसिट. जैसे आर्टिकल 32 से जुडिशियल रिव्यू मिल सकता है ना आपको. वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन और बिकॉज ऑफ एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, यू कैन गो टू द
Supreme Court directly. That is also one ways in which you can say you indirectly or you very implicitly in an implied manner understand that you have the idea of judicial review which prevails in India as well. तो भारत में जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, बट ये इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है. 226 में हाईकोर्ट के पास ये पावर है, तो वहां भी इम्प्लिसिटली हम कह सकते हैं that under 32 to 26 we implicitly see that there is the power of judicial review. But if you look at 13 clause 2, that is very explicit. That is very clear-cut powers that the judiciary has in terms of reviewing a law which is made by the legislature, and it is very clearly spelled out that these laws cannot violate the fundamental rights. So 13.2 is like very explicitly helping us understand the ideas of judicial review in our constitution. Okay, so I think this is an idea, judicial review. And why judicial review is important for us? Judicial review is also important for us because as a doctrine, judicial review upholds the idea of limited government. हम limited government को पढ़ रहे थे. Judicial review से भी क्या होगा? The government will be limited in its authority. Why? Because if it does something which contravenes the fundamental right, then its action can be declared null and void. So it knows that it has to act within certain limitations. It has to act within certain boundaries. That is why the doctrine of judicial review also establishes the doctrine of a limited government. And limited government is very necessary for the creation of a idea of constitutionalism in the state. तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टिव होती हैं, है ना. इसलिए चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर हो, चाहे वो द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो, जुडिशियल रिव्यू अपने आप में जुडिशियल रिव्यू के पावर से ही डिराइव्ड होता है. प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रोटेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. व्हाट यू सी इज दैट जुडिशियल रिव्यू ने इन सभी चीजों को मजबूत किया है. जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को मजबूती दी है, सेपरेशन ऑफ पावर में मजबूती दी है, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कराने में मजबूती से काम किया है इस आइडिया ने. प्लस यू कुड ऑल्सो से दैट जुडिशियल रिव्यू हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड दिस इज जुडिशियल रिव्यू which has protected the idea of judicial review also. अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता तो फिर जुडिशियल रिव्यू के आइडिया को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे हम. आराम से कोई कानून बना के इस पावर को हमसे ले लेता, है ना. जैसे पार्लियामेंट ने बहुत बार कोशिश की, पार्लियामेंट ने लिख दिया कानून में कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती. ऐसे बड़े सारे अमेंडमेंट्स हुए हमारे यहाँ जहां पर पार्लियामेंट ने ये लिख दिया दैट देयर कैन बी नो जुडिशियल रिव्यू. जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी के लिए 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1975 में इंदिरा जी ने, और उसमें ये लिख दिया कि इमरजेंसी की रिव्यू नहीं हो सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती. तो 44th में आके उसको डिलीट करना पड़ा, है ना. लेकिन चलो ये तो उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन ऐसे बड़े सारे अमेंडमेंट हैं जहां सरकार ने ये लिख दिया था लॉ में कि इन चीजों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप. जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ भी हो यू कांट टेक अवे द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो इसलिए एस्टैब्लिश होता है ये फैक्ट ना. और इसलिए जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें जुडिशियल रिव्यू चाहिए. अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं है इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, यू कांट इवन प्रोटेक्ट जुडिशियल रिव्यू आल्सो, बिकॉज देन लॉ मेकिंग बॉडी कैन क्रिएट एनी लॉ, टेक अवे योर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. व्हाट विल यू डू देन? इट इज जुडिशियल रिव्यू व्हिच विल रिव्यू दैट लॉ एंड से कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, इट इज नल एंड वॉइड on one or the other reasonable grounds. That is why it's very very necessary and important. इसलिए केशवानंद भारती जब हम पढ़ते हैं तो वहां केशवानंद भारती में भी कोर्ट ने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड यू जस्ट कांट टेक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इवन थ्रू अ अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप अमेंड भी कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को और उसमें भी लिख दीजिए कि इसकी रिव्यू नहीं हो सकती, तो भी कोर्ट ने ये माना कि ऐसा नहीं हो सकता. Judicial review is a basic structure, even though you can amend the constitution, but that amendment will be null and void. हम उसको null and void घोषित करेंगे. कैसे कोशिश करेंगे? By the power of review itself, judicial review itself. So when we read Article 13, especially when we read Article 13 Clause 2, we end up understanding the concept of judicial review as well. ठीक है? पहले ये लिख लेते हैं, फिर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करना है, which is about the amendability of fundamental right. क्योंकि 13 clause 2 से हमें ये समझ में आया
You can't make any law which will violate a fundamental right. तो अब मेरे मन में एक प्रश्न आता है, यानी आपके मन में आता है, मेरे मन में तो नहीं आ रहा, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आता है. You get a question in your mind, and the question is that can we amend the fundamental right then? So 13(2) में लिखा हुआ है you can't make any law that will contravene fundamental right. But you read Article 368, उसमें लिखा हुआ है कि you can amend the constitution by special majority. Now if I do it, then are you going to declare it null and void because it violates fundamental right? तो मैं अगर कुछ चेंज कर दूं फंडामेंटल राइट में बाय अमेंडिंग 368 का यूज करके, तो क्या आप वो करने देंगे हमें? तो ये कब पता चलेगा? जब पार्लियामेंट पहली बार ये जरूरत करेगा और फिर जुडिशियल रिव्यू में वो जुडिशरी के पास आएगा, और तब बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमें ये समझना और देखना कि जुडिशरी ने क्या स्टैंड लिया. सो विल हैव टू लुक एट द अमेंडमेंट्स मेड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट. Only parliament can amend the constitution, and when they had amended the fundamental right, that's more interesting. And not only amended it, but they have amended it in such a manner that it has contravened fundamental right, यानी violate कर दिया fundamental right को जो हमें मिला हुआ था. So now 13(2) says that you can't make any law that violates fundamental right. So can you really do it? So it's a debate between 13 clause 2 and Article 368 actually, which is the most important debate to understand fundamental right. अगर हमने यहाँ इस पूरे डिबेट को समझ लिया, अमेंडेबिलिटी के पूरे पोर्शंस को अगर समझ लिया, तो फिर फंडामेंटल राइट में कुछ भी समझने को बहुत मुश्किल नहीं है. यहीं पे वो डिबेट है जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे, सब कुछ केशवानंद भारती, ये सब सारे जो मेजर जजमेंट्स हम यहीं पे पढ़ लेंगे अभी, ताकि आगे हम बस रेफरेंस उसकी बात करेंगे, आपको सबको पता होगा कि हमें क्या पढ़ना था या क्या समझना था. ठीक है, दैट्स बेसिकली दी आइडिया. सो जुडिशियल रिव्यू, ये टॉपिक लगाया, इसमें लिख लीजिए. It is the power of higher judiciary. It is the power of higher judiciary it is the power of the higher judiciary to declare a law to declare a law to declare a law made by the state to declare a law made by the state. यहाँ पर state का मतलब legislature, made by the state as unconstitutional and void if the law violates the provision of the Constitution. If the law violates the provision of the Constitution. It originated from Marbury versus Madison 1803 case in USA. It originated from Marbury versus Madison 1803 case in USA. Marbury versus Madison को अंडरलाइन कर लो. Justice Marshall declared that an independent judiciary has the power to review laws made by the legislature as well as
as well as the actions of the executive, as well as the actions of the executive. Next point. In our country, judicial review is found implicitly मतलब आप कह सकते हैं indirectly, है ना? Implicitly, IMPLICITLY, implicitly under article UY, under article 32 and 226 in the form of writ jurisdiction, WRIT, writ jurisdiction given to the Supreme Court and High Court, respectively. ठीक है, तो वहां पर एक बहुत एक्सप्लिसिटली आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का एक आइडिया हमें लगता है। इम्प्लिसिटली फंडामेंटल राइट्स के लिए स्पष्ट रूप से कहाँ हमें दिखता है? 13 क्लॉज 2, क्योंकि 13 क्लॉज 2 केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए है। तो ये बहुत क्लियर कट है और स्पष्ट है अबाउट आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू, स्पेशली फॉर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, however when it comes to the protection of fundamental rights, judicial review is explicitly mentioned under article 13 clause 2, 13 clause 2, full stop. It states that the state shall not make any law which takes away or abridges, abridge मतलब कम करना, shorten करना, है ना? abridges, ABRIDGES, any law which takes away or abridges one or more fundamental rights, full stop. If any such law is made, if any such law is made, then the law shall be declared null and void to the extent of such violation of the fundamental rights. Next, the doctrine of judicial review. The doctrine of judicial review has helped in upholding
held in upholding the doctrine of limited government, the doctrine of limited government, comma, supremacy of constitution, supremacy of constitution, comma, rule of law, comma, independence of judiciary, federalism, separation of power, comma, protection of fundamental rights, and the protection of the judicial review, itself. Next, in case of Keshwanand Bharati versus State of Kerala, in Keshwanand Bharati versus State of Kerala, Keshwanand Bharati versus State of Kerala, the Supreme Court declared that judicial review is part of the Supreme Court declared that judicial review is part of the basic structure of the Constitution, which cannot be taken away, by means of a constitutional amendment, act. Okay, so this was like our discussion on the, or a note on the issue of judicial review, how we basically decipher and try to infer the idea of judicial review also from these distinct articles which are part of the fundamental rights. And overall, what is this concept of judicial review and why it is so crucial? Because this idea of judicial review helps to maintain all these prominent ideas, whether it is separation of power, whether it is, the idea of federation, whether it is the idea of a limited government, whether it is very idea of protecting judicial review itself or idea of protecting the fundamental rights itself. You will see that in India, the judicial review is prominently positioned on
protection of these sort of ideas from the Indian Constitution. That we have judicial review, but what do we do with the judicial review? We ensure that we protect these basic principles that defines our Constitution. Even to the extent that we see very explicit provisions which tries to protect or safeguard the fundamental rights that is mentioned in the Indian Constitution. Plus, we could say that some very important principal ideas defining the Indian Constitution, they are also protected through the idea of the judicial review. Now, because we have read Article 13, so therefore comes a very important question, a proposition, which is about that tomorrow if we want to amend something in fundamental right, then is it allowed as per the reading of the Constitution or not? So, amendability of fundamental right. This is a very, very crucial issue, because actually in this issue we are trying to understand two things together. On the one hand, we are trying to understand what is written in Article 13 clause 2, and if you read Article 13 clause 2, I told you that this very explicitly gives you the idea of judicial review for the protection of fundamental rights. That is, fundamental right has to be protected by way of review by the judiciary, so that your fundamental right is not violated. Okay, that is what we can read with 13 clause 2 versus we are looking at Article 368, because 368 says that the power of the parliament or the parliament can amend the constitution. हालांकि ये शुरू में नहीं लिखा हुआ था, इसको amend करके हमने लिखा है, but 368 का जो basic मतलब क्या है, that you can amend the constitution by way of addition, by way of deleting something, repealing something, adding something new, which means you can do that in the constitution. So can we use 368 and repeal or add something in the fundamental right also? तो fundamental right में जाकर वहां भी हम कुछ नया लिख सकते हैं क्या by using Article 368? Because 368 demands that we should pass that by special majority, that's it. And what about 13 clause 2? If we do something by 368, then does 13 clause 2 means that we can declare it null and void if it violates fundamental right? That's the question we want to know. तो इसका मतलब तो ये होगा कि फंडामेंटल राइट में तो कोई छेड़छाड़ हम कर ही नहीं सकते, कभी कोई बदलाव कर ही नहीं सकते, यानी ऐसा बदलाव जिससे कि फंडामेंटल राइट किसी को कॉन्ट्रवीन हो, किसी के फंडामेंटल राइट कमजोर हो जाए, हम कम कर दें, किसी से ले लें, हम छीन लें किसी की फंडामेंटल राइट. तो सरकार तो कानून बनाएगी, तो लिखा हुआ है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं कर सकता, अगर करेगा तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. जितना ज्यादा जितने एक्सटेंट तक वो करेगा उतने एक्सटेंट तक वो नल एंड वॉइड हो जाएगा. इसलिए मैंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, बाकी चीज रह जाएगी, जितना फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ वो चीज हट जाएगी उस लॉ से. बट फिर 368 क्यों लिखा फिर कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो व्हाट वी कैन डू विद 368? बिकॉज 368 इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. Constitutional amendment means part 3 is also part of the constitution, so we can amend it or not. So that's why this question is between 368 and 13 clause 2. So if I am using 368, then will 13 clause 2 become applicable or not? Can I declare anything that I do with 368 null and void by using 13 clause 2? तो जैसे मान लो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट पे हमने कहा कि आज से ये फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलेगी. We wrote that in the constitution through amendment. So which means I have contravened, abridged, shortened the fundamental right. So 13 clause 2. So can 13 clause 2 declares that kind of a law as null and void? That's the basic question that we want to know, because this is what we get in terms of the discussion on the issue of amendability of fundamental rights. अब ये विषय क्यों आया? तो देश आजाद हुआ. People who are fighting for the country's independence, everybody has a desire that India will become free and this freedom will bring a new life for them. People who were landless workers, peasants, who were working on others' field, who were working on, who were selling their labors, they had a desire that when India will become free, then Indian state is going to give them land, so that they would have a small piece of land which they would call as their own. Then they would work very hard on that land, and then their condition would be progressed. They would advance. Such kind of an idea. If you're a woman, you thought that this is going to end a bit of patriarchy which prevails in the system. Women will be treated equally. Women will be given more dignity. So every class, every gender, and
The entire Indian society, which was mobilized for the freedom movement, all of them had their own set of desires for a post-independent India. Now, I have already told you that whatever India was going to achieve in its post-independent avatar, that will be achieved only through the constitution. Because in India, there is no revolution which has taken place. So people have not dismantled the existing structure, but people in our country, we have continued with the existing structure. So that is why we read Transfer of Power, India Independence Act 1947. So we continued with the same sort of institution, laws, rules, regulations, democracy, system. Everything was existing in India, and the British merely transferred the power to govern and rule, especially through British-made laws also. So we had no revolution. There was continuity of the Raj in all its forms, in all its manifestation, we can say. So what is crucial here, the Indian state tries to respond to this issue. Because in India, the most important occupation for the people is agriculture. But people have no land. Bulk of the land belongs to zamindars, the feudal lords. तो हमें तो दूसरों के खेत में ही काम करना पड़ेगा. और हम सोच कर क्या लड़ रहे थे आज़ादी की लड़ाई, कि देश जब आज़ाद होगा तो मेरी आज़ादी कब आएगी, जब मेरे पास अपना ज़मीन होगा, जिसे मैं अपना कह पाऊंगा, मैं उस पर खेती करूंगा, मैं गुजर बसर करूंगा. तो अब क्या हुआ कि दी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज लाइक लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो. तो अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी. कैसे करेगी? एक्सेस लैंड लेगी तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी लैंड को. तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार कानून लाना पड़ेगा. तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे देश में अलग अलग जगह पर, दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो बहुत प्रेशर में, बहुत दबाव में काम कर रही हैं. दे आर एक्चुअली अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. व्हाट इज दैट प्रेशर? द प्रेशर इज बेसिकली फॉर लैंड रिफॉर्म. कि डिमांड है सोसाइटी के अंदर से कि अब आपको लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा, करना चाहिए. अब उस वक्त देश में क्या है कि एक ही पार्टी का शासन है, केंद्र से लेकर राज्य तक हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है. तो कांग्रेस की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, उसमें ये डिमांड बहुत है. वो सब इन्फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे को कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड दैट वी विटनेस इन आवर कंट्री. पीपल आर क्राइंग फॉर लैंड रिफॉर्म्स, और हमें लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा. विल हैव टू वर्क एज पर द डिमांड्स रेज्ड बाय द पीपल. So we'll have to bring in land reform laws. Land reform laws कैसा? Like जमींदारी एबोलिशन एक्ट, है ना. लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग मतलब आपके पास 200 एकड़ जमीन है, हम ये कहेंगे एक परिवार के पास 50 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, तो जितना एक्सेस है वो सरकार ले लेगी. जमींदारी एबोलिशन यानी जमींदार और उनकी जो पूरी मलकियत है वो एबॉलिश कर देंगे. तो इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे सीलिंग से, ताकि सरकार की कोशिश थी दैट वी शुड टेक अवे द एक्सेस लैंड and then state should redistribute it among the poorer sections of the society, so that we'll be able to fulfill one of the important promises that we have made to the people, that is for land reform. तो एक्चुअली कंडीशन ये है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट कौन है? स्टेट गवर्नमेंट खास तौर पे इज अंडर tremendous pressure for लैंड रिफॉर्म्स. यानी सरकार जो है भूमि सुधार के लिए बहुत ही दबाव में है. द गवर्नमेंट इज रीलिंग अंडर इमेंस प्रेशर फॉर लैंड रिफॉर्म. सो नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट दे विल ब्रिंग इन लैंड रिफॉर्म लॉज. तो वो क्या करेंगे? लैंड रिफॉर्म लॉज बनाएंगे. ठीक है. सो द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग इन लैंड रिफॉर्म लॉज. ओके, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इन
some land reform legislation और land reform laws. ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत एक्साइटेड है लैंड रिफॉर्म लॉज लाने के लिए, वो लेकर भी आ गए. लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ दीज लैंड रिफॉर्म लॉज विच वर मेड वाज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. उस वक्त हमारे देश में राइट टू प्रॉपर्टी इज अ fundamental right. So because right to property is a fundamental right, so what would happen at that time? Most of these laws that you see, जो लैंड रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, अब ये जितने लॉज बन रहे थे, अधिकतर लॉज सब चैलेंज हो गए कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में. बिकॉज पीपल वेंट टू द कोर्ट डायरेक्टली बिकॉज इट वॉज वायलेटिव ऑफ देयर फंडामेंटल राइट. एंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32(2) to 6 says that if your fundamental right is violated, you can directly approach the Supreme Court under 32, High Court under 226. 226 मतलब 226. बहुत बच्चों को लगता है कि 226 का मतलब हुआ 2 से 6, तो कहते हैं सर इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है. 226 मतलब 226, 226. ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ओके, तो विच वॉज द फेमस केस? तो जितने लोगों से, यानी जो बड़े भूमि वाले लोग थे, उनकी जमीन तो जाएगी ना, और ये सब अमीर लोग भी थे, तो इनको कोर्ट जाने में कोई परहेज भी नहीं था. एक बड़ा फेमस केस हुआ कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. कामेश्वर सिंह कौन है? कामेश्वर सिंह इज बेसिकली अ एरिस्टोक्रेट, मतलब दरभंगा महाराज आप कह सकते हैं उनको. एंड कामेश्वर सिंह goes to the court against the Bihar land reform law, because Bihar land reform law has taken away land from the law actually takes away land from कामेश्वर सिंह. और उन्होंने कैसे चैलेंज किया? उन्होंने कहा कि 13(2) में साफ साफ लिखा हुआ है that any law that contravenes any fundamental right to the extent of contravention, it shall be declared null and void. So it's very clear in the constitution, this is the land reform law that the Bihar state has made and this violates my right to property. कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है. तो कोर्ट ने कहा कि the Bihar land reform law is null and void. हो गई जीत, बात खत्म हो गया यहां पे. दूसरा कंडीशन आया, यानी एक इस तरह के बड़े सारे लॉस थे और बहुत स्टेट्स में चैलेंज हुआ, बहुत हाई कोर्ट्स में हुआ. कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने ठीक माना लॉ को, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इसका एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, रिफॉर्म करने की कोशिश है. तो कुछ हाई कोर्ट्स ने साथ भी दिया, लेकिन अधिकतर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज नल एंड वॉइड, तो इसका मतलब है दीज काइंड ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज दे वोंट बी सस्टेन्ड, नल एंड वॉइड. तो हम 13 क्लॉज 2 का इस्तेमाल करके आपने देखा कि फंडामेंटल राइट को जो वायलेट कर रहा था लैंड रिफॉर्म लॉज, उसको डिक्लेयर कर दिया गया नल एंड वॉइड. स्टेट ऑफ मद्रास, वहां पर रिजर्वेशन की डिमांड थी. रिजर्वेशन कहां? फॉर हायर एजुकेशन. वेरी फेमस केस. तो ये दो बड़े केसेस बनते हैं यहां पर कि द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग इन लैंड रिफॉर्म लॉज. फिर एक पॉइंट लिखिए, बट द judiciary struck down those laws on the ground that it was violative of fundamental rights under article 13 clause 2. ये 13 clause 2 को यूज करके कोर्ट्स ने उनको डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड, है ना. कौन से दो बड़े फेमस केसेस आए हमारे पास? तो एक केस था, यानी जिसको हम देख सकते हैं एज कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना. ये बहुत फेमस केस है, 1950 का केस है, जब लैंड रिफॉर्म लॉज आने लगे, बनने लगे स्टेट गवर्नमेंट्स. तो बिहार के लैंड रिफॉर्म लॉ को चैलेंज किया कामेश्वर सिंह के इस केस ने, और सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट इज नल एंड वॉइड. ठीक है. सो द सुप्रीम कोर्ट
declared the Bihar land reform law as null and void. Okay. Why did the Supreme Court declare null and void? Because under Article 13 Clause 2, it is very clear that no law can contravene the fundamental right. And these land reform laws were contravening what? Right to property. And right to property is a fundamental right. So court took a very conservative stand. They said that no, because it is written in the constitution, we can't do anything. We have to protect. So we cannot help you. दूसरा एक और इंटरेस्टिंग केस आया which was a case of चंपाकम दोरईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. अब मद्रास में एक अलग डिमांड है. उस वक्त मद्रास में बड़ा डिमांड है कि जो बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी के उनके लिए रिजर्वेशन हो फॉर एडमिशन इनटू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो मेडिकल कॉलेजेस इस तरह के कॉलेजेस में उनको रिजर्वेशन दीजिए जो बैकवर्ड क्लास है. तो वहां आप देखेंगे कि सरकार तुरंत एक लॉ बनाती है और गवर्नमेंट वो लॉ बनाती है और एक रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर देती है फॉर पीपल हु आर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी. सुप्रीम कोर्ट इस बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन पॉलिसी को भी कहता है दिस इज नल एंड वॉइड बिकॉज व्हाट इट डज इट वायलेट्स आर्टिकल that is the right to equality, that is it violates the principles of right to equality, that is equality before law. It violates the principle of non-discrimination, so it is discriminatory. So what we could see here is that all of these laws which were made, they were actually declared null and void because of Article 13 Clause 2. Because 13 Clause 2 says that no fundamental right could be violated. Kameshwar Singh, Article 31 was violated. For Champakam Doraizan, Article 14 was violated. Article 14 and as well as Article 15 as well as Article 16, all of these were violated because it talks about non-discrimination. तो कोर्ट ने ये साफ स्पष्ट कर दिया कि किसी कानून को बना करके आप किसी की फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते. एंड इफ यू आर डूइंग दैट देन वी विल हेल्प द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड. तो अगर मान लो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, उसका लाभ किसी ने उठाया, तो जिसको उसके लाभ मिलने से जिसका एडमिशन नहीं हो पाया उसने चैलेंज कर दिया और उसने कहा कि दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड यू हैव रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट any law if it violates my fundamental right it can be declared null and void. So declare this reservation policy as null and void. The court obliged. So these were the two very famous cases that we need to know. One is Kameshwar Singh versus State of Bihar और दूसरा है चंपाकम दोरईराजन versus State of Madras 1951. Okay. The Supreme Court declared the reservation policy. The Supreme Court declared the reservation policy of the State of Madras as null and void. Reservation policy of the State of Madras as null and void. तो exactly वही हुआ because इसमें भी कोर्ट ने कहा it is violative of Article 14, it is violative of Article 15. So because it is violative of these provisions, therefore we cannot allow this law to continue. So under 13 Clause 2 we are declaring it null and void. तो क्रिटिक्स एक्चुअली वो बहुत खुश नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों डिसीजन से, निर्णय से. क्रिटिक्स ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट समाज में रिफॉर्म नहीं करने देगा, अगर हाई कोर्ट समाज में रिफॉर्म नहीं होने देगा, तो फिर हाउ कुड सोसाइटी प्रोग्रेस? कॉन्स्टिट्यूशन समाज के लिए बना है, समाज के प्रोग्रेस के लिए बना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी राइटिंग कैन नॉट कम इन द वे ऑफ
progress of the society, welfare of the people. So critics said one very important point. They said that Supreme Court and its interpretation is such that it is in favor of zamindars, it is in favor of the elites of the society, and it is against the people who are downtrodden, who really needs the help of the state. So actually critics ये कहना चाह रहे थे कि Supreme Court and its interpretation of fundamental right has taken a very conservative view, and they are against any kind of attempt made by the state for which is progressivistic. तो वो किसी भी प्रगतिशील कदम को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको सहयोग नहीं कर रहे, उनकी सहायता नहीं कर रहे. और अगर ऐसा है, if that is the reason that they are not supportive of the progressive steps taken by the state, then it's problematic. It's problematic because we need such an interpretation of the constitution which would allow reforms, which would allow the society to progress. But these judgments that has emerged out of the Supreme Court and the High Courts, they are very conservative in nature, and Indian society will not realistically progress with that kind of an approach. तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अच्छी खासी आलोचना हुई इस वक्त, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर कट था. अब आप समझो इस बात को. सुप्रीम कोर्ट at that time did not want to do anything extraordinary. Why? Because India had just become independent. People who were lawmakers, they had great reputation. Most of these people had fought for India's freedom. So Supreme Court did not want to do anything that would actually be problematic for them. लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान को भी तो नहीं पलट सकता है ना. सुप्रीम कोर्ट आखिर 13 क्लॉज 2 को तो पढ़ता, हाई कोर्ट 13 क्लॉज 2 को तो पढ़ते, तो उनका इंटरप्रिटेशन एकदम कंसिस्टेंट था. उन्होंने कहा कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे विच इज आउट ऑफ व्हाट इज मेंशन्ड और रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर संविधान में ही हम ये लिख दें, इफ वी अमेंड दीज आर्टिकल्स, लेट अस अमेंड आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 दिक्कत कर रहा है ना. आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट कर दो और लिख दो कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. रिजर्वेशन दे दो उनको. फिर लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है, लेट अस अमेंड आर्टिकल 31. वी विल राइट डाउन दैट स्टेट कैन एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक पर्पसेस, distribute them for public purposes. So now people understood that 13 clause 2 is used to declare all these null and void. So why can't we use 368 then and write that itself in the constitution? And when we write this in the constitution, then Supreme Court will interpret the constitution. यानी सुप्रीम कोर्ट का काम तो इंटरप्रिटेशन है संविधान का. अगर हम संविधान में ही यह बात लिख देंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो लिखा है वही तो इंटरप्रेट करेगा. Then we'll be able to do our land reform. Will be able to bring in the desired reservation policies, and then things would follow. लेकिन अब राज्य सरकार ये सब लॉ लेकर आ रही थी, लेकिन राज्य सरकार तो अमेंडमेंट कर नहीं सकती. तो कांग्रेस पार्टी में एक कंसेंसस बना, and every state government they demanded to the government at the center that why don't you reform the constitution. और सोचो 50 में संविधान एनफोर्स हुआ है और 51 में हमको संविधान में संशोधन करना पड़ गया. एक साल भी हम नहीं चला पाए. We had to amend the constitution. Why? Because the demand and the pressure was such on the state. तो सरकार ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें संविधान को अमेंड करने से रास्ता निकल जाएगा तो लेट अस अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. बट अगेन हम अमेंड तो कर देंगे, बट अल्टीमेटली हमारा अमेंडमेंट वैलिड है या इनवैलिड ये तो कोर्ट तय करेगा. ठीक है. लेकिन इस बार एक रास्ता उनको नजर आया. रास्ता क्या था? उन्होंने कहा कि जो 13 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है लॉ, तो अगर हम संविधान को अमेंड ही कर देंगे तो फिर तो जो लिखा हुआ है वही तो होगा ना. तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या रोक लेगा अभी हमें भी नहीं पता है. So nobody knows. So there is uncertainty. So now we have to look at the interpretation of the Constitutional Amendment Act. So if you see the definition of law, वहां पर देखो मैंने ये बात कहीं नहीं लिखा है कि Constitutional Amendment Act will also be considered as law. Law made by legislature, rules, regulations, notifications, customs, सब लिखा है मैंने. But I have not written the word that Constitutional Amendment Act is also a law. So now the question that comes to us is that is Constitutional Amendment also a law as per definition of Article 13 of the Constitution? क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि any law cannot violate. तो वकील ये कहेगा कि ये लॉ थोड़ी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है.
लॉ मीन्स ऑर्डिनरी लॉ। तो इसीलिए स्टेट ने जो लॉ बनाया उसको आपने नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि स्टेट तो अमेंड कर नहीं सकता, 368 आर्टिकल यूज नहीं कर सकता। whatever law state will make, that will be ordinary law. By simple majority they'll make it. But this time let us amend the constitution, write all the things that we want to achieve, want to do in land reform, in reservation policy, in the constitution itself. And once we have written everything in the constitution, then let us see how does the court interpret it. So state was, like center was thinking that we'll able to find a way out. 368 का यूज कर दिया तो हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो हम बचा लेंगे। हमें जो भी करना है हम एक मॉडल लॉ बना देंगे, अब उसके बाद स्टेट हर जगह इंप्लीमेंट कर देगा उसको। फिर लोगों ने कहा कि ये जो हमारे यहाँ लॉज पहले से बने हुए हैं ये सब तो इसका क्या होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लैंड रिफॉर्म के जो लॉज बनाएंगे उसको हम 26 जनवरी 1950 से लागू कर देंगे। दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। 51 में लॉ बनाया लेकिन उसको कब से लागू किया, बैक डेट से, ताकि उस हिसाब से अगर हमारा अमेंडमेंट वैलिड है तो सारा लॉ वैलिड हो जाए। ऐसे सरकार सोच रही थी उस वक्त। तो सरकार के अंदर खूब डिस्कशन है, खूब बातचीत हो रही है। एवरीबडी इज मेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट दैट वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, you know, people have great faith in us, you know, we have got the power, you know, we'll again go to the people for election. What will we say to the people if we don't fulfill their aspirations, if we don't fulfill their wishes? So out of all these contexts emerged the, इसके बारे में लिखा हमने, लिख लिया ना, हाँ। So out of all these discussions, what emerged was the first CA 1951. पर इसके पहले ऊपर एक लिख दो, क्रिटिक्स का पॉइंट नहीं लिखा है ना हमने, हाँ। द क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, द क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट the critics pointed out that the interpretation of the constitution, the interpretation of the constitution, interpretation of the constitution by Supreme Court was such that it looked in favor of, was such that it looked in favor of the zamindar, in favor of the zamindar, and against the policy of reservation. That is the judiciary was taking a conservative stand, and was non-supportive of progress. तो ये विवाद है। इसके बाद जो कंडीशन है, सरकार के सामने एक उपाय आता है और फिर सरकार क्या करती है, द गवर्नमेंट पासेस दी फर्स्ट CAA 1951, दैट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। देखो इसमें काफी अमेंडमेंट्स होता है, आर्टिकल 19 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में भी अमेंडमेंट होता है, पर अभी मेरा फोकस केवल 2 आर्टिकल पर है, क्योंकि मैंने चंपाकम राजन की बात की तो आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन पर फोकस है, और फिर राइट टू प्रॉपर्टी उसकी बात हमने की है तो आर्टिकल 31। मैं अभी 2 पर फोकस करके बताऊंगा। प्लस ये भी है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट और भी हुए थे, स्पेशली आर्टिकल 19(1) ए में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था उसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है 19 क्लॉज 2 में, तो 19 क्लॉज 2 वाज आल्सो अमेंडेड एंड सम मोर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाज एडेड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। तो 19(2) जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसके बारे में लिख लेंगे एंड विल राइट डाउन कि फर्स्ट अमेंडमेंट में और क्या क्या हुआ था। फिलहाल अभी इस दोनों अमेंडमेंट में व्हाट वाज अमेंडेड, आर्टिकल 15 and article 31 was amended,
तो 31 इज राइट टू प्रॉपर्टी और ये है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी का प्रिंसिपल है। तो इन दोनों में अगर हमने अमेंडमेंट कर दिया और ये लिख दिया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, तो रिजर्वेशन भी लागू हो जाएगा। प्लस 31 में अगर हमने लिख दिया कि स्टेट कैन take or acquire property for public purposes, so then we'll be able to carry on with the reform process that we have undertaken. State दोनों चीज को मानती है। अब रिजर्वेशन जब इसके बारे में लिखना शुरू किया इन्होंने कि what we have to now write down, तो 15 क्लॉज 3 तक हमारे पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे। अभी 15 पढ़ा नहीं हमने, और जब हम पढ़ेंगे तो 15(1), 15(2), 15(3) था। तो 15(4) इन्होंने ऐड कर दिया। व्हाट वाज एडेड? आर्टिकल 15(4) was added या inserted in the constitution by first CA 1951। और 15 clause 4 में क्या लिख दिया कि the state can provide special provision। स्पेशल प्रोविजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेट ने ये अमेंडमेंट इसलिए किया ताकि वो एजुकेशन में रिजर्वेशन कुछ कम्युनिटीज को दे सके, या कम्युनिटीज को स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटीज दे सके, है ना। किसी तरह का आप कह सकते हैं कि कोई कम्युनिटी है जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसके लिए कुछ आप एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जहां उनको आप स्पेशल ग्रांट दे रहे हैं, है ना, इसको वजीफा कहते हैं आप, फॉर दी डेवलपमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स जैसे बोलते हैं आप, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएगा, 15 क्लॉज 4 के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। क्योंकि 15 क्लॉज 4 ये कहता है, और बहुत जनरल जैसा लिखा है, इसका लैंग्वेज बहुत जनरल था, कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लास citizens including scheduled caste and